You need to wait for just 2 or 3 minutes more, as we are going live, so it will take 2-3 minutes, right? Okay. ये डिस्टरबेंस बहुत है मैम, आप ना सबको या तो म्यूट कर दीजिए। Yes, ma'am, I do. We are live now, so we are going to start. With your permission, ma'am, can we? Yeah, ma'am, please. Okay, thank you so much, ma'am. Good afternoon to one and all present here, and it gives me immense joy to welcome you all on day 5 for Faculty Development Program on Institutional Values, Vision and Leadership. I welcome our distinguished speaker of the day, Dr. Anuradha Jain, Dean School of Business Studies, Vivekanand Institute of Professional Studies. I also welcome our principal, Dr. Kiran Angra, Assessment cum Accreditation Ambassador Paramash, various principals of Menti colleges, my friends and colleagues of Menti colleges, NAC coordinator, Mrs. Nishu Bansal, my most cherished IQAC and NAC team, and other dignitaries present here. Dear friends, as we have joined together under Paramash scheme of UGC to reflect on the most important feature of NAC, that is academic and administrative audit. I feel overjoyed and my gratitude goes to Dr. Angra for giving all of us this wonderful opportunity to organize such an important faculty development program under the Paramash scheme of UGC. Dear friends, it is also my proud privilege to introduce today Professor Anuradha Jain. I have to. I'm really very sorry for the disturbance. Professor Anuradha Jain is a staunch academician with a perfect blend of interest in curricular as well as co-curricular activities. A scholar from University of Bombay, she has been dedicated to the teaching community for over 21 years. Professor Jain is a fanatical economist with her areas of interest in international trade and international business. In addition, Professor Jain has been rendering her responsibilities in the capacity of Dean, Statutory Compliance and Inspection at VIPS. With over 7 years of her exposure as NAC assessor, she has fathomed the nitty-gritty of minutest aspects of NAC and NBA accreditation process. Due to Professor Jain's strong intent of disseminating her knowledge with larger audience, she has been invited as a celebrated expert in the field of accreditation. Professor Jain has numerous research papers to her credit in diverse areas and has been chairing expert sessions in various national and international conferences. She has been invited as a conference chairperson and keynote speaker at Oxford, London. She is on the panel as an expert in economics for selection board of various state public service commissions. She also holds significant membership positions as advisory board Center for Education, Growth and Research, Indian Commerce Association. She also has the honor of being the chairperson of Social Welfare Cell, Center for Education, Growth and Research. She has been instrumental in uplifting the rights of women as General Secretary, Women Division, International Jurist Council,
She has been awarded Shiksha Gaurav Puraskar 2016 and Innovative Leader Award 2017. Respected ma'am, we are really very glad to have you with us. And now the dais is yours. Yeah, thank you so much, Dr. Anuradha. And respected Principal Ma'am Kiran Angraji, Dr. Anuradha, IQAC Coordinator, and Ms. Nisha Bansal, NAC Coordinator, and all the participants here. So I'm thankful for giving me opportunity for the second time in this workshop in this FDP. And I'm sure I will do some value addition to all the participants here in terms of. Ma'am, kindly unmute yourself. Yeah. Actually, this today's topic is again very, very important topic. That is academic and administrative audit. Academic and administrative audit, this note was issued by NAC in 2017, okay, which is a very good step taken by NAC. Because before going for NAC accreditation, if we start following the system of audit, okay, then it becomes easy for us to go for accreditation process. But regarding this, academic and administrative audit, there is no specific guidelines from the NAC, like whether we should go for it every year or once in 5 years or once in 2 years, or this type of guidelines are not given by NAC. But yes, they have asked all the institution that before going for NAC, they should go for academic and administrative audit. Okay, so today we will be discussing in detail, like what all can we do under this academic and administrative audit. And I will show you one, format which is prepared by me for our institution, so that you can get an idea like what can be the format for this. That will be just a sample, okay, because there is no hard and fast any guidelines given by NAC, so that according to your requirement you can do it. But requirement should be based upon the requirement of NAC, in the sense that you should involve or include all those points which are the requirement for our SSR when we are applying for NAC accreditation. Okay, so keeping that in mind, I have prepared this AAA format for my institution. I will show you that, and we will discuss that. First, we will just have brief outline, like what this AAA is and what should be included into that. So I'll be sharing my screen, okay, and then we will discuss this topic in detail. So just give me 1 minute so that we can share the screen. Okay, is my screen visible to all of you? Yes, is it visible? Yes, okay. It is visible. Okay. So I'll just switch off my camera, okay, so that after this for discussion, I will switch on again. So that I can just see properly this. Okay, now see, let us discuss about academic and administrative audit, which is the requirement of NAC. Now, what is academic audit? If you see the screen, you can see this academic audit. Academic audit is nothing but, it's a model for our self-reflection or self-assessment, you can say. Okay, like on which we can do our self-assessment, that what are we about, how do we stand, what are our achievement and all. Okay, and it is, you can say that a structured conversation among the faculty members, stakeholder, and the peer reviewers. So structure conversation in the sense that in a very, very structured way, we will try to find out what are the achievements of the department, what are the achievements of the students, what are the achievements of the faculty members, and we also try to interact and try to analyze the status and interacting with all the stakeholders,
Okay. And what is the common goal of doing this academic audit? Common goal is to improve quality process in teaching, learning, and evaluation. Okay, so that we can enhance the student success, because any educational institution, the main idea of any educational institution is the student. दैट इज द सेंटर पॉइंट, क्योंकि उन्हीं बच्चों के लिए हम लोग आते हैं, बच्चों के लिए ही सारा काम होता है। तो उन बच्चों का फाइनल सक्सेस क्या है और कैसा हमारा टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन प्रोसेस है, सो ऑल दिस एकेडमिक ऑडिट मूव्स अराउंड those ideas of teaching, learning, and evaluation process, and how we can improve the quality of teaching, learning, and evaluation so that the success rate of student will improve. Okay, success rate of student, success rate unka kya hai? Success rate hai in terms of results, okay, in terms of placement, okay, in terms of higher education, ताकि वो बच्चे अच्छी जगह प्लेस हो पाए, या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वहां पर उनका एडमिशन हो। That is our main target of doing our academic audit. The next is administrative audit. Administrative audit क्या है कि हर institution का अपना एक स्टाइल होता है for administrative activities. Okay, so इसमें कैसा delegation of power है, what is the organization structure of your institution, how decentralization of power is done, okay, what are the policies and procedures of the institution, उसमें स्ट्रेटेजीज क्या है, उनके क्या फंक्शंस हैं ऑफ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एंड हाउ यू कंट्रोल, ओवरऑल कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप एट प्रेजेंट भी अगर नैक का स्ट्रक्चर देखें, तो अभी मैंने रिसेंटली एक असेसमेंट किया, उसमें मैंने देखा कि अगर हम टोटल पॉलिसीज की बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो करीब 30-35 पॉलिसीज जो आती हैं लिस्ट डाउन करने के बाद कि इतनी पॉलिसीज होनी चाहिए एक इंस्टीट्यूशन में। पॉलिसी लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम लाइक एडमिशन से ही बात करें तो स्टूडेंट एडमिशन पॉलिसी, ओके, एडमिशन हम कैसे करते हैं, क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, सो दैट विल कम अंडर एडमिशन पॉलिसी। देन फैकल्टी रिक्रूटमेंट पॉलिसी, फैकल्टी प्रमोशन पॉलिसी, ओके, अगर परचेज हो रहा है तो व्हाट इज द परचेज पॉलिसी, व्हाट इज द मेंटेनेंस पॉलिसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज द मेंटर मेंटी पॉलिसी ऑफ द इंस्टीट्यूशन। इस तरह से अगर हम काउंट करें, बिकॉज आई लिस्टेड डाउन, if anybody needs I can share that with all of you, then it comes around 30-35 policies which any institution should have. तो वो पॉलिसीज क्या है, उसके स्ट्रेटेजीज क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ओवरऑल हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सो दैट कम्स अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव audit, because now they talk about good governance, e-governance, okay, so everything comes under this. So overall AAA means academic and administrative audit, पूरा audit हमें करना है, so it's the first step towards our submission of SSR जो हम submit करते हैं, self study report, okay, so this will be just the preparation towards that step. So it is very very helpful because it is my personal experience कि जब हम इसको करना शुरू करते हैं और अगर हम एनुअल करते हैं तो आपकी एसएसआर की तैयारी, नैक की तैयारी ऑटोमेटिक हो जाती है। Okay, then next is about what are the principles of academic audit, academic and administrative audit. So किस प्रिंसिपल पे क्या चीज हमें ध्यान में रखते हुए हमें ऑडिट का फॉर्मेट बनाना चाहिए, उसमें फर्स्ट पॉइंट इज दैट फोकस ऑन टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, ओके, बिकॉज दिस इज द सेंटर पॉइंट, ऑल ऑफ यू नो। अगर नैक का आप अगर देखें पैरामीटर्स, तो क्राइटेरियन 2 talks about teaching, learning and evaluation process, and complete criteria 2 is of 350 points. So out of 1000, 350 points means 35% weightage is given to teaching, learning and evaluation process. So it's a very very important criteria. अगर आपका टारगेट है कि you want to get A grade in NAC, so obviously you should focus on criterion 2, because अगर criterion 2 हमारा अच्छा नहीं है तो you cannot get A grade in NAC, because 35% weightage is given to this teaching, learning and evaluation process. So हमारा पूरा academic audit का जो फॉर्मेट है उसमें मेन फोकस शुड बी गिवन टू टीचिंग, लर्निंग एंड इवैल्यूएशन प्रोसेस. इन दिस
We should talk about like what are the teaching pedagogies the teachers are using, how they are interacting with the class, experiential learning हो रही है नहीं हो रही है, evaluation process आपका कितना transparent है, okay, और continuous evaluation है या नहीं. So all these parameters should be there, how you are evaluating your students. So everything should come under your academic audit. So you should always focus, more focus on teaching, learning and evaluation. क्योंकि अगर 35% अगर यहाँ पर आपने मिस कर दिया तो it will be very very difficult to get A grade or even B plus also it will not be possible. Okay, then second principle is define quality in terms of learning outcome. Learning outcome, because अभी अगर आप देखें तो नया जो कंसेप्ट है दैट इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन. ओके, इवन न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज आल्सो टॉकिंग अबाउट आउटकम बेस्ड एजुकेशन. और कोई भी अगर काम करते हैं हम लोग तो एंड रिजल्ट क्या है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो स्टूडेंट आल्सो टॉक अबाउट द आउटकम, learning outcome. और इसीलिए you know that we all define our course outcome, program outcome, which is the necessary requirement now for NAC also. तो खाली define करना outcome is not sufficient, बल्कि you have to see, you have to check क्या वो जो आपने outcome define किए हैं क्या वो बच्चा उस outcome को achieve कर पाया है. Learning outcome, are they achieved, to what extent they have achieved okay their outcome. So that is also very very important. So that we should include in our academic audit that what are the learning outcomes and what are the achievement. और final outcome क्या है, final outcome क्या होगा, final outcome in terms of जैसे मैंने बताया results. Okay, final results क्या है, what are the percentage of students those who are passed out. Okay, then what is the percentage of marks that they have scored, कितना उसमें distinction है, कितना merit है. फिर उसके बाद अगर बच्चा प्लेसमेंट चाहता है तो कितनी प्लेसमेंट आपकी हुई है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट दोज हु आर प्लेस्ड. या कोई हायर एजुकेशन में गया है तो कितने बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन में गए हैं. ऑल दिस डिटेल यू शुड हैव because these details are very very important. Okay, so this should be included in the academic audit. Then develop research culture, because you know criterion 3 talks about research. Even if it is undergraduate college, okay, it is not a postgraduate college and teaching is our main function, but still they talk about research. Okay, तो research, because और दूसरा भी a good teacher is always a good researcher, or you can say those who can do good research they can only teach better. So therefore what happens is that developing research culture is very very important. So that should also be included. Then teamwork, because teamwork is important, because जब हम hierarchy की बात करते हैं, हम पूरा achievement की बात करते हैं, then you know that we cannot achieve anything without the teamwork. Teamwork plays a very very important role in any audit process or also for the achievement of the institution or for the best outcome. Teamwork is important. Next is evidence-based documentation. Like whatever you say should be always supported by the supporting document, which is very very important. अगर आप NAC का अभी recent performa अगर आप देखें, अगर एक चीज भी अगर आपने ऐसी लिखी है जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, then they will not count that things. So हर चीज के लिए, हर छोटी चीज के लिए आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना है, और इनफैक्ट valid documentary evidence, because I have seen NAC now blacklisting colleges जिनका एविडेंस प्रॉपर नहीं है, या उनको लगता है कि ये फर्ज किया हुआ डेटा है या ओवर राइटिंग है या सिग्नेचर ठीक नहीं है. एंड यू कैन चेक द NAC वेबसाइट एंड you will find many cases there जहां पर 3 साल के लिए इंस्टीट्यूशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया बिकॉज उनका डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, जो एविडेंस उन्होंने दिया वो प्रॉपर नहीं है. ओके, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल फॉर एविडेंस पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट. कोई भी चीज ऐसी आप बिल्कुल मत लिखिएगा अपने SSR में जिसका आपके पास प्रूफ नहीं है. ओके, और जो प्रूफ भी है उसको आप 3 बार चेक करिएगा बिफोर सेंडिंग दिस टू NAC कि ये प्रूफ ठीक है. बिकॉज मेनी टाइम्स नॉट बिकॉज कि हम लोग उनसे चीट करना चाहते हैं, बट कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो कि प्रॉपर प्रूफ नहीं है.
Like suppose for example, if you are doing any research or you are publishing paper, अभी आपने देखा होगा कि यूजीसी केयर लिस्ट दे काउंट, और यूजीसी केयर लिस्ट का अगर आप देखेंगे देयर आर क्लोन ओके जर्नल्स, जो कि डुप्लीकेट जर्नल्स आ गए हैं विद द सिमिलर नेम, और अगर ऐसा पब्लिकेशन हुआ और आपने वहां पे डाल दिया तो वो तो फिर चीटिंग वाले केस में आ जाएगा, जबकि हमारा कोई फॉल्ट नहीं है उसमें. But we as a teacher, we have to be very very careful when we are publishing our paper या कोई भी document अगर हम दे रहे हैं तो that should be very very authentic and proper document. Okay, then next principle of our academic audit should be continuity and consistent. Continuity and consistency is very important. Okay, because what happens is अगर आप किसी साल में आपने बहुत अचीव कर लिया, किसी साल में कम अचीव किया, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो that also shows you a negative reflection on the institution. और वैसे भी वो 5 ईयर का एवरेज निकाल रहे हैं. 5 ईयर का एवरेज तब तक नहीं प्रॉपर आएगा तब तक जब तक आप उसमें कंटिन्यूटी नहीं है और कंसिस्टेंसी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल, इवन इफ यू आर साइनिंग MOU, okay, because there is one head that you have to sign MOU with the NGO या MOU with other eminent organization. आपने MOU तो साइन कर लिया, बट उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स या उस MOU से बेनिफिट लेने के लिए, और इसलिए दे हैव यूज्ड द टर्म फंक्शनल MOU. ओके, फंक्शनल MOU विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फंक्शनल नहीं है, एक बार साइन करके आपने डंप करके रख दिया, देन इट इज ऑफ नो यूज. So therefore continuity should be there. Whatever you do, it should be a continuous process. क्योंकि अगर continuous process नहीं होगा, अगर one time exercise होगा, so that will not change your culture there, work culture. Okay, so work culture को change करने के लिए continuity and consistency is very very important. The next is application of best practice, which is again very important. Application of best practice, क्योंकि अभी आपने criterion 7 में भी देखा होगा कि they ask 2 best practices. Okay, 2 best practices भी ऐसा नहीं है कि आपने लिखने के लिए एक बार लिख दिया and that's all. Application of best practice is very important because अगर आप उसमें format देखेंगे तो they ask like what is the outcome. What is the outcome of that best practice? Okay, so outcome of that best practice can come only when you are doing that in a continuous process. Okay, so it should be a continuous process. It should become the part and parcel of the institute. वो एक आपके कल्चर में आ जाना चाहिए, लॉन्ग रन में उसका इफेक्ट दिखना चाहिए, then only you will get points there. तो उसको डिफरेंट हेड्स है कि आपका कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस है, देन व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू फेस्ड इन अप्लाइंग दोज बेस्ट प्रैक्टिसेस, उसका आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है, व्हाट आर द अचीवमेंट्स दैट यू हैव डन बिकॉज ऑफ दोज बेस्ट प्रैक्टिस. सो ऑल एवरीथिंग शुड बी स्टडीड इन डिटेल. Okay, then community orientation and public perception. Now you know that criterion 3, they talk about extension activities. Okay, community orientation. Community orientation means your service towards the society, your CSR activities, your community. बाहर के society के लिए आपने क्या किया, बाहर के लोगों में आपका perception क्या है, because बाहर का perception तभी होगा when you will go out, when your students will go out and they will work something for the society, they will contribute for the society. Okay, so therefore community orientation and public perception is very very important. Alumni and placement, this also you know that in criterion 6, okay, and criterion 3 they talk about alumni, they talk about placement. So alumni का data आपके पास पूरा होना चाहिए, कहाँ वो है, क्या कर रहे हैं, where they have taken admission or where they are working, that all should be there in place with proper proof. Without proof they will not accept anything. Okay, NAC will not accept anything without the documentary evidence. और इसीलिए हो रहा है, I have visited many institution in the new system, और मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि जितने भी पहले A ग्रेड कॉलेज थे या A+ थे, their grade are going down. Why they are going down? ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, हमने जाकर देखा, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया हुआ था, बट प्रॉब्लम क्या है कि 70% is now done through the third party DVP. Now third party second 70% assessment when they are doing only on the basis of कि आपने रिपोर्ट क्या भेजी है और आपने कितना उसके साथ
अपना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाया है। और हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं रखते, और इसी वजह से जो काम आपने किया है उसके भी नंबर आपको नहीं मिलते। I have seen, like, 4 colleges, I will not name them, but those who were good and those who were A and A plus, they have come down to B. Okay, so therefore we have to be very, very careful about your data, about your documentation, about the proof of everything what you do. Okay, then continuous improvement, yes, we have discussed that continuous improvement is very, very important. Okay, क्योंकि अगर student, suppose if they are achieving 60%, next semester they should get more than that, next semester more. That means our graph should be upward sloping graph. Okay, it should show that yes, your institution is growing. Okay, your students are improving, their performance is improving, they have good outcome. Okay, everything should be there in your visible in your academic audit. Then good governance, as I said, that proper policies should be there, proper systems should be developed. Okay, and proper everything should be under control, proper hierarchy, proper decentralization, everything should be there. Okay, and this should be the part of academic audit. The next is about this audit, academic and administrative audit. उन्होंने कहीं पे कुछ define नहीं किया कि आपको external team बुलानी है या internal team बनानी है, कि आप कैसे भी कर सकते हैं। आप inter department wise कर सकते हैं, like suppose if you have 6 departments in your institution, तो आप एक department से दूसरे department का भी assessment कर सकते हैं। You can ask them to fill the form. You can go as a peer team there. आप उनसे बात कीजिए, आप उनकी फैकल्टी से बात कीजिए, स्टूडेंट से बात कीजिए, सबसे इंटरेक्शन कीजिए, and then you can assess, you can find out. So there can be internal academic and administrative audit, there can be external academic and administrative audit. Okay, so there can be both ways. कोई hard and fast rule नहीं है, कहीं पे कोई define नहीं किया है कि आपको external team ही बुलानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर इंटरनल टीम आप बनाते हैं तो उसका कंपोजिशन क्या हो सकता है? कंपोजिशन कैन बी लाइक प्रिंसिपल कैन बी द हेड ऑफ द टीम. Okay, then IQAC coordinator can be the member, NAC coordinator can be the member, 2 or 3 experts you can take, okay, from within the college, within the institution, and you can make a team and you can go and visit the other department and you can assess, you can prepare your report, and then you can give the gap analysis. You can just discuss with them कि यहाँ पर आपके gaps हैं और इसको आप improve कर सकते हैं, इसको कैसे improve कर सकते हैं. Otherwise, you can have external academic and administrative audit. External में principal and your IQAC coordinator can be the part. You can invite 2 experts from outside or 2 or 3 experts depending upon कि आपका college का institution का size क्या है, कितने बच्चे हैं, कितनी faculty है. Depending upon them, you can invite the external experts. Okay, so it can be internal, it can be external. तो इसमें कोई भी ऐसा hard and fast rule नहीं है कि आपको सिर्फ internal ही करना है या आपको external ही करना है. External करने से सिर्फ ये होता है कि चीजें unbiased हो जाती हैं. Unbiased in the sense कि क्योंकि वो neutral रहेंगे. इंटरनल लोगों में कभी कभी ये लगता है कि कोई भी प्रेशर भी हो सकता है या कोई ऐसा रिलेशन हो कि आप इंटरनल मेंबर कैन नॉट स्पीक एनीथिंग नेगेटिव अबाउट देयर कलीग्स और अबाउट द अदर डिपार्टमेंट. सो बिकॉज ऑफ दैट, इफ दीज आर द प्रॉब्लम्स, देन यू कैन गो फॉर द एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स you can invite. Now, stages of the AAA process. What can be the stage? हम उसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? So सबसे पहला तो स्टेज है कि you should prepare the format. Okay, कि किस फॉर्मेट में आप वो फॉर्मेट सारे डिपार्टमेंट्स में यू कैन शेयर अगर डिपार्टमेंट वाइज कर रहे हैं. एंड माय सजेशन इज दैट यू शुड गो डिपार्टमेंट वाइज, ताकि आपको माइक्रो लेवल पे पता लगेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और कितना अचीव उन्होंने किया है, कहाँ पर इश्यूज हैं. तो you can prepare the format, you can share that format to all your department heads. आप उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए कि 1 month time or 15 days time, let them prepare their report as per the format given. उसके बाद they will prepare like self-study report with evidence, with everything. Like as NAC ask for evidence, you will also ask for every evidence.
हर चीज जो भी उन्होंने एक शब्द भी अगर बोला है तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए. लाइक सपोज इफ आई से दैट आई एम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, देन आई शुड हैव द लेटर issued by the college that yes, you are the principal of the college. Okay, if I say that my name is Dr. Anuradha, then I should give the documentary evidence that my Aadhaar card or my PAN card, that yes, this is the proof that I am this or that. Okay, so everything should be supported by the document. Then next is the next step can be internal peer review or evaluation of the self study report. ओके अगर आप इंटरनल कर रहे हैं तो इंटरनल, अगर एक्सटर्नल कर रहे हैं तो एक्सटर्नल. सो पीयर रिव्यू, they will go, they will visit, team will visit the department, they will evaluate their report. जो भी रिपोर्ट उन्होंने बनाई, जैसे नैक में होता है ना, पीयर टीम आती है और वो पूरा इवेल्युएशन करती है. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो दिस टीम, whichever team you prepare, they will go and evaluate the self study report कि जो भी उन्होंने रिपोर्ट दी है वो कितना उसमें ठीक है, क्या है. they will recheck and they will evaluate. Then modifying the self study report based on the internal peer. That means जो भी उसमें रिपोर्ट आई है, they can ask to modify it. Modify अगर कहीं पे कोई difference है, कहीं पे कोई gaps है, तो you can, that peer team members will discuss, they will tell them, and they will implement these suggestions and peer review report. Means whatever suggestions, like suppose for example if I come as a peer team member, आपका ऑडिट करने अगर मैं आती हूँ और मैंने देखा कि आपकी जो टीचिंग पेडागोजीज है वो ठीक नहीं है, ओके, या आप बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग यू आर डूइंग, लाइक चॉक एंड डस्टर मेथड और नथिंग एल्स. और नैक क्या बोलता है, नैक आस्क फॉर डिफरेंट मेथड्स. ओके, लाइक उसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी होना चाहिए, रोल प्लेस भी होना चाहिए, डिस्कशन भी होना चाहिए, प्रेजेंटेशन भी होना चाहिए. सो आई कैन गिव माई सजेशन that this part is not included or these things are not appropriate, then department will adopt those methods. Okay, similarly there can be other suggestions also, like suppose for example career counseling session nahi kiye kahin par, okay, department mein, so you can suggest कि आपके career counseling session नहीं हुए, how students will prepare themselves, you know, for higher education or for placement. और प्लेसमेंट के लिए प्री प्लेसमेंट टॉक नहीं है, कंपनीज कम आई है, प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं है. सो दिस कैन बी द evaluation report, or this can be the suggestions, and on the basis of those suggestions you should arrange, then department should arrange those things ताकि जहां पर भी गैप है वो. then उसके बाद अगर आप करना चाहो तो एक्सटर्नल ऑडिट भी कर सकते हैं, एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द एक्सटर्नल पीयर टीम. सो इट्स अ प्री नैक प्रोसेस, यू कैन से, कि नैक में जाने से पहले आप एक असेसमेंट कर रहे हैं. लेकिन अगर आपको नैक में अभी जाना है या 6 महीने में जाना है, नैक के लिए अप्लाई करना है, और तभी आप करेंगे तो आपके पास टाइम नहीं बचेगा. हार्डली यू विल हैव टाइम फॉर प्रॉपर इम्प्रूवमेंट एंड ऑल. तो अगर आप नैक के लिए 2 साल बाद के सोच रहे हैं, 1 साल बाद का सोच रहे हैं, तो अभी से आपको ये प्रोसेस करना चाहिए, सो दैट एटलीस्ट यू विल हैव 1 year टाइम, 1.5 year टाइम विद यू, ताकि आप उसको अच्छे से रिकवर कर सके चीजें और आप उसको गैप्स को फिल कर सके. अगर क्योंकि टाइम ही नहीं होगा तो गैप देख के भी क्या फायदा है. अगर आप वो गैप को फिल ही नहीं कर सकते, then what is the use of discussing about the gaps. So therefore you should start this process early, और I will advise that at least once in a year या 2 years में एक बार जरूर ऑडिट होना चाहिए, so that gaps आपको साथ साथ पता चलते रहेंगे और साथ साथ you can improve upon this. Okay, so this was the brief idea about AAA academic and administrative audit. So if there is any question related to this, then we can discuss, and then I will show you the format. Okay, so if there is anything you want to ask, anything you want to ask. Let me unmute all. Only then they can ask. Otherwise, आप chat box में भी डाल सकते हैं. You can put your questions in chat box. And ma'am, you have to unmute yourself. If anybody writes in the chat box, because देखो format तो मैं आपको दिखाई दूंगी अभी, पर अगर इसमें अगर कुछ भी है आपके क्वेश्चन, so you can ask.
Do peer reviewed journals also have the same weightage as that of no? Abhi Rose has asked one question that if we publish our paper in peer reviewed journal, API score में तो आपके मार्क्स मिलते हैं, बट अभी जो NAC ने जो सिस्टम बनाया है उसमें वो काउंट नहीं कर रहे हैं. दे विल काउंट ओनली यूजीसी लिस्टेड जर्नल. उसमें एक और डाउट आता है लोगों का कि अगर हमने 2 साल पहले किसी यूजीसी लिस्ट में डाला पेपर और आज वो नहीं है यूजीसी लिस्ट में, ओके, बिकॉज एवरी ईयर दे रिवाइज द लिस्ट, सो इन दैट केस इट विल बी काउंटेड. क्यों? क्योंकि जिस समय आपने पब्लिश किया था उस समय तो वो था यूजीसी में, है ना. अगर आज हम देखें यूजीसी केयर लिस्ट और आज हम अगर पब्लिश करते हैं अपना पेपर और कल को वो हटा दे तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमने तो आज के लिस्ट देखकर किया है उसमें. So then it will be counted, but otherwise count peer review journal count नहीं होगा. It is very clearly it is written on the NAC website also. आप उसको SOPs है, उस पर SOPs अगर आप देखोगे तो आपको बहुत clearly दिख जाएगा कि वो count नहीं करेंगे. Even same with FDP. अगर FDP का भी अगर आप देखें तो अगर 7 days से कम FDP है तो वो count नहीं करेंगे. उसको 7 days से कम के एफडीपी को भी काउंट नहीं करते. ओके, तो अगर मेरा सजेशन ये है कि 7 days और 5 days, नो 7 days मैम. तभी मेरा ये सजेशन है आपको कि जिसने भी ये एफडीपी अभी की है ना, आप लोग करवा रहे हो, तो आप जब सर्टिफिकेट दोगे आप डेज मत लिखो, आप उसमें 1 week लिख दो एफडीपी, ताकि वो काउंट हो जाएगा इनका. अगर आप 5 days लिख दोगे तो वो काउंट नहीं होगा. but ma'am, if we means attend FDPs of like MHRD and from HRDC department of UGC, even then it is of 5 days. 5 days है, लेकिन क्या होता है कि देखो आप उनको तो कुछ नहीं बोल सकते है ना. अब नेट ने 7 days बोल दिया, लेकिन 1 week is also taken as 7 days. अब वो 1 week में आप 5 days रखो, आप 6 days रखो. तो इट्स माय सजेशन कि ऑल द पार्टिसिपेंट्स यू प्लीज गिव सर्टिफिकेट मेंशनिंग 1 week एफडीपी. ठीक है ना, वो आपका अंडरस्टैंडिंग ठीक है. आपने वर्किंग 5 days रखा, लेकिन कम से कम सबको बेनिफिट हो जाएगा. अदरवाइज फिर उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि it means we should not mention the dates. Don't mention the days. हाँ, don't mention the days. You just mention 1 week long program. And dates, ma'am, dates dates आप mention कर सकते हो, dates mention कर सकते हो, लेकिन dates में आप जो Saturday Sunday वाला वैसे include कर देना ना फिर. we have done on Sunday also, ma'am. हाँ, एक दिन आप वैलिडिक्टरी रख देना उसमें, एक दिन ऐड करके वैलिडिक्टरी रख दो, ताकि वो कम से कम आपके डेज वहां पर काउंट हो जाएंगे. राइट मैम, राइट. जो डीवीवी का जो सिस्टम इन्होंने रखा है ना 7 days वाला, अब वो 7 days में, और जो डीवीवी का जो सिस्टम है जो ऑडिटर्स करते हैं, अब उनको देखो, दे आर नॉट टीचर्स, दे आर नॉट एकेडमिशियंस, दे आर जस्ट द ऑडिटर्स, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट एकेडमिक्स. वो क्या करेंगे, उनको तो एक ब्लैक एंड व्हाइट में ये देखना है कि भाई 1 week मुझे लेना है या 7 days लेना है, तो वो वही लेंगे, वो बाकी कुछ नहीं देखेंगे वहां पर. पर हमारे पास वो आएगा नहीं जस्टिफिकेशन के लिए. अब हम कहाँ एक्सप्लेनेशन किसको देंगे, हमें ये नहीं पता कौन वैलिडेट कर रहा है उसको. ठीक है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है. तो जितना हम चीजों को क्लियर रखें उतना अच्छा है. Okay, and there is one more question, like chapter in edited book. Yeah, chapter in edited book is counted, but it is under the different head. Okay, there are different heads, but उसमें ISBN number है, then it is counted. But different heads है, एक head है journals का, दूसरा head है chapter in edited books. Okay, or if you have conference proceedings, yeah, if you have written any book, or suppose you have edited any book, so all that comes under different head of criterion 3. तो उस head में तो वो count हो गई. जर्नल का अलग head है, तो जर्नल में तो count नहीं होगा. Okay, but edited book should be with ISBN number. और अगर conference proceeding भी है तो conference proceeding में पूरा full paper होना चाहिए. Because I have seen many, conferences where they just publish the abstract या extended abstract करते हैं. अब extended abstract करने से काम नहीं चलेगा, तो जो full paper जहां पर है वो ही count होगा, and that too with ISBN number. Without ISBN number नहीं होगा count. But ma'am, it costs too much, ma'am. Sometimes it is not possible to publish full paper, na?
नहीं, अब वो तो है, So लेकिन वो could we do e-book or e-souvenir also with हाँ, ISSN? यस यस, ई सोवेनियर विल ऑल्सो डू। बस वो ISBN नंबर या ISSN नंबर होना चाहिए। ई कॉपी आप दे दो, जैसे अभी हमने कॉन्फ्रेंस की, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, कॉस्ट की बात आई ना, इसलिए बता रही हूँ। तो हमने क्या किया, वी टुक ऑल लाइक फुल पेपर्स, और हमने उसकी हार्ड कॉपी 10 ही बनाई। बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे उनको हमने ई कॉपी सर्कुलेट कर दिया। But ma'am, publisher they say we won't publish less than 100 copies. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देर आर मेनी Because पब्लिशर्स। they say it will cost like the same 10 or 100 copies. फिर भी अभी, या तो फिर पार्टिसिपेंट से वी कैन चार्ज लाइक 200-300 रुपीज पर। Right, ma'am. Right, वो चीजें तो फिर हमें देखना, मैनेज करना पड़ेगा जैसे भी हो जाए। right, ma'am. Yeah. Otherwise, it will do with ISSN number also if I'm हाँ, right. क्योंकि जर्नल का तो ISSN नंबर ही होगा और बुक का ISBN नंबर होगा। And ma'am, कॉन्फ्रेंस को अगर आप बुक में कन्वर्ट करेंगे तो वो ISBN नंबर आएगा उसका। Excuse me, ma'am. Ma'am, Yeah, if ma'am. we conduct FDP in our host college, then whether it will be considered under NAC? Yes, it will be considered. In fact, वो आपके दो जगह भी काम आ सकता है, because there is one head where they ask like FDP organized. Okay, ठीक. और One will be FDP attended. लेकिन उसमें सिर्फ ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि पार्टिसिपेंट्स कुछ बाहर के भी हो, 2-4 हो जाए, और कुछ उसमें रिसोर्स पर्सन भी बाहर के हो। अदरवाइज यू नो व्हाट हैपेंस, व्हाई NAC इज आस्किंग फॉर ऑल दिस, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, सपोज अगर मेरे पास कोई फैकल्टी ने FDP नहीं किया तो मैं 100 सर्टिफिकेट भी प्रिंट करके दे सकती हूँ उनको, है ना? That तो can be fake. हाँ, सो ऑथेंटिसिटी क्या है? ऑथेंटिसिटी तभी आप उसको कर सकते हो जब when you can show that there were participants from outside also and the resource person were also from outside. ठीक है, वो आप पूरी रिपोर्ट उसका बनाएंगे with photograph. Okay, so it is very authentic then. ठीक है, okay, thank you, ma'am. हाँ, thank you. Yeah, anything else? there is one more question, ma'am. हाँ. I think it is. Yeah, ma'am. Chat box में है क्या? Yeah, chapter published in conference proceeding book, ma'am. हाँ, it will be counted. It will be counted. बट वो ISBN नंबर, ISSN नंबर होना चाहिए बस, दैट्स ऑल। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर। और देयर इज वन मोर क्वेश्चन। It is not a question, ma'am. It is, I think, they are just writing that they are publishing book. they are. It is done by mistake because it was. She said sorry for sending to the host only. Okay, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Sometime our book is revised, and whenever the book is revised, new ISBN number is given. So that will be counted again. It means you can count again, yes, if it is a separate ISBN number. Yes, तो yes. आप उसको 2 में काउंट करो, बल्कि रिवाइज्ड एडिशन है तो क्या हुआ, 2 में काउंट होगा, because there are different ISBN number. Yes. Okay, ma'am. Thank you so much. हाँ. Right. Okay. There is one more question. Language, different language. Yeah, different language. Language doesn't matter. Whether you publish in Hindi, Punjabi, English, whichever language, it should be a publication. Okay. तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. It will be counted. Jose has asked that please elaborate peer-reviewed journals and care list. अभी जो अगर आप आजकल का स्टेटस देखते रहोगे तो every journal is a peer-reviewed journal. Okay, everybody writes it's a peer-reviewed journal. Peer-reviewed journal means they send it for review for the outsiders. Okay, so that is peer-reviewed journal. But UGC, there is a list on the UGC website, okay, where they have mentioned the list of the journals which are up to the mark of UGC, up to the standard which UGC needs. वो proper पूरा screening होकर आई है वो list. Okay, they have checked the quality of paper, quality of journals, quality of publishers and all. तो वो list वहां पर है UGC की वेबसाइट पे, अगर आप जाएंगे तो अभी 21 की भी लिस्ट है, 2021 की। एवरी ईयर दे रिवाइज, और आफ्टर एवरी 2 years दे रिवाइज द लिस्ट। अगर कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा जर्नल तो दे रिमूव दैट नेम एंड दे ऐड द न्यू नेम्स।
Okay, so you can check there. So उसमें आपके peer reviewed जो अच्छे जर्नल है वो भी है, Scopus listed भी है, ABDC के भी है, जो भी best जर्नल है, they are all the part of UGC care list. Okay, so as per your subject, your specialization, you can just check the list from there and you can send paper there. Excuse me, ma'am. I have one question. Yeah, sir. Suppose I written one article in about on the level of the fitness. Hello. Hello. Nehal sir, I think your connection is low, bandwidth is low. That's why you are not able to put your question directly. Could you please send it in the chat box? Okay, no problem. Ma'am, I too have one question. Like for arts people, means this is the question asked many times. We don't have Scopus, less number of Scopus journals and all, and SCA journals. So what should we do? Yeah, but and especially ma'am, like subjects like Hindi, music and all. नहीं, अगर आप उस पर देखेंगे ना यूजीसी केयर लिस्ट में तो काफी है, आप देखिए उसमें। अगर आपको चाहिए ना मैम, आप मुझे अपना नंबर एक बार भेज देना, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी यूजीसी केयर की। मेरे पास पूरी लिस्ट है 20 की, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। उसमें है, हिंदी के भी हैं। सेम आर्टिकल। Thank you so much. Anupam sir has raised hand. Anupam has raised hand. Sir, you can unmute yourself and ask question directly to ma'am. Anupam sir. Hello, good afternoon, ma'am. Yeah, good. Well, my name may deceive you. It's a she. Okay. Yeah, sorry. No problem. I have a question, ma'am. When we talk about conference proceedings, and then there are conference proceedings would mean that the paper has been presented and now the paper has also been published. So when we count, do we have to count it again and again, or do we count it only for conference proceedings and then we do not give, count it in publication or presentation for that matter? Ma'am, अगर आप देखेंगे ना, if you see the latest, SAR format, SSR format, you will see that there is no scope for any presentation there. Okay, they have not asked anywhere paper presented in the conference. They have only asked if it is published in the conference proceeding. तो डबल काउंट तो फिर होगा ही नहीं वहां पर, क्योंकि प्रेजेंटेशन के लिए वो मान ही नहीं रहे हैं, उसको कहीं पर भी नहीं ले रहे हैं, खाली प्रेजेंटेशन को। अच्छा, सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन के साथ अगर आपकी उसमें पब्लिकेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं भी है लेकिन आपके प्रोसीडिंग में पब्लिकेशन है, हाँ, वो उसी को ही काउंट कर रहे हैं, खाली प्रेजेंटेशन को दे आर नॉट काउंटिंग। Okay, ma'am. Okay, there is no head related to presentation. Ma'am, there is a question from Mr. Nehal. I write a paper on fitness in English language and same article I translated it in Hindi. Can it be possible? See, if same article in Hindi, if it is published in some other book with some different ISBN number, if they have accepted it, then yes, it will be counted. It won't come under then plagiarism or like that. That is what I'm saying. Like if journal has accepted it, okay, plagiarism, it may not come because it is translated into the different language. Okay, so therefore it will not come under plagiarism. So if other journal is accepting, that means it will be counted. Okay. Yeah, is there any other question? Okay, so no more questions. So now I will show you one format which I prepared for my college. Okay, so you will just get an idea like what all we can include. So I will just share my screen. Yeah, is it visible? My screen is visible? Yes, ma'am. Yes. Okay, now see, this is my college and
what I have done, audit, academic and administrative audit. So I've written academic session, department, dean, mobile, email ID. These are the basic information. Okay, so therefore, like you should know like which department, which year, because agar every year if you are doing, so year should be mentioned there. Then details of academic programs, supporting documents as an extra one. Okay, so academic programs, like suppose for example, there is a department of suppose law, and department of law may suppose there is BA LLB, BB LLB, BCom LLB, LLM. Okay, so they should also mention the different programs which they are running, कौन से year में start हुआ, उनका sanction intake क्या था, और actual number of admissions क्या थे. Okay, because this is also required in your SSR. Okay, so आपका data भी collect होता जाएगा. और यहाँ पर supporting document क्या है? Supporting document means जो आपको university से letter आया होगा. Okay, यूनिवर्सिटी से जो प्रोग्राम के लिए लेटर आता है, अप्रूवल के लिए लेटर आता है, so that they can attach there and then they can mention here. Then was academic calendar prepared at the beginning of the session, strictly adhered to. So academic calendar prepare हुआ, कितना उसको follow किया, तो उसका yes या no, and then they have to mention it, and then they have to attach the academic calendar of the department. Okay, then next is list of committees in the department. Okay, our department may, you know that there are different committees, so they should list down. So you can see this. I've written name of the departmental committee, name of the convener of the committee, फिर उसमें कितने meetings हुए, क्या MOM minutes of meeting बनाए क्या नहीं बनाए, और क्या था minutes of meeting, and action taken report बनी है क्या नहीं बनी है सबकी. Because on the earlier my session with you, I told you that कोई भी इवेंट करने के बाद खत्म नहीं होता, या कोई भी मीटिंग खाली मीटिंग से खत्म नहीं होती. एक मीटिंग को आपको दिखाने के लिए आपको मीटिंग का नोटिस चाहिए, मीटिंग जिस दिन हुआ उस दिन का सिग्नेचर सबका जो भी मेंबर्स थे उसमें, फिर उसके मिनट्स चाहिए, एंड देन एक्शन टेकन कि जो डिस्कशन हुआ उसको कितना इम्प्लीमेंट किया आपने. ओके, सो एक्शन टेकन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर एक्शन टेकन नहीं है तो मीटिंग करने से कोई फायदा नहीं है. Okay, so see, I have asked everything कि कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी कमेटी है, क्या कौन कन्वीनर है, कितनी मीटिंग्स हुई उस साल में, कितने मिनट्स वो बनाई है, और क्या एक्शन टेकन है, yes या no, and then they will define, because they have to give everything as an attachment. Okay, यहाँ पर attachment में सब चीजें आ जाएगी फिर. Then next is plan of action chalked out by the department in the beginning of the academic year towards quality enhancement and the outcome achieved by the end of the academic year. कि उन्होंने क्या क्या activities क्या plan किया for the quality enhancement, department के quality enhancement के लिए क्या plan of action था, और उससे क्या क्या achievement हुआ, outcome क्या हुआ. Like suppose for example, अगर मैं इसमें लिखती हूँ कि अगर सपोज मैंने अपने डिपार्टमेंट में मैंने प्लान किया कि आई विल हैव मोर नंबर ऑफ सेशंस रिलेटेड टू करियर काउंसलिंग. ओके, या फिर सपोज उनको आगे प्लेसमेंट के लिए मैंने रिज्यूमे राइटिंग पे करना है, उनको इंडस्ट्री के लिए रेडी करना है, कैसे रिज्यूमे लिखना है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देनी है, एंड आई हैव टू मेक माय स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी. ओके, सो दैट इज माय प्लान ऑफ एक्शन. But what are my achievements? Achievement क्या हुआ? Achievement में how many sessions I have organized? What is the end result? कितने बच्चों को उससे फायदा हुआ, कितने बच्चों की प्लेसमेंट हुई उसकी वजह से. So everything will come here. The next is list of faculty members with details of mandatory key result areas as notified in the. तो मैंने क्योंकि अपने डिपार्टमेंट का है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा था अपने यहाँ पर कि हर फैकल्टी को एक साल में एक रिसर्च पेपर करना है और एक FDP करनी है. Okay, so this is the result I am asking from the department कि details of published paper published in journal. Okay, कौन से जर्नल में हुआ, कितना पेपर हुआ, पेपर presented in the conference, then paper published in the conference proceeding, details of paper published in the edited book, and details of FDP या orientation program या refresher course which they have done. So faculty wise, name wise, okay, so they have to give, every department they have to give yearly. So ये सब इसमें आ जाएगा. The next is students profiling after admission. So what we do here कि जब बच्चों का एडमिशन हो जाता है उसके बाद we do profiling of the student. Profiling कैसे कि बच्चा किस बैकग्राउंड से आया है. Like suppose for example
अगर सपोज मेरे यहाँ पर बच्चे ने एडमिशन लिया, सपोज कोई भी कोर्स में, सपोज इकोनॉमिक्स ऑनर्स में लिया, अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन तो ले लिया, बट यू नो दैट इकोनॉमिक्स में मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैथ्स उसका वीक है सपोज, तो मैं उसकी प्रोफाइलिंग करूंगी, उसका चेक करूंगी कि मैथ्स में उसके 12th में मार्क्स क्या थे। ओके, एंड कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसने मैथ्स नहीं पढ़ा 11th 12th में, सो वी डू प्रोफाइलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, और उसके बेसिस पे हम ब्रिज कोर्स उनके लिए रखेंगे, कुछ 1 वीक का, 4 दिन का, सो दैट हम उन बच्चों को उसके लेवल पर लेकर आए, बाकी बच्चों के लेवल पर लेकर आए, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड। फिर उसी के बेसिस पे हम उसमें एडवांस लर्नर निकालेंगे, स्लो लर्नर निकालेंगे, या सेमेस्टर रिजल्ट्स आने के बाद, या आपने इंटरनल कोई टेस्ट लिया, उसके बेसिस पे आप स्टूडेंट की प्रोफाइलिंग करेंगे उसमें कि कितने बच्चे हैं जो एडवांस लर्नर हैं, कितने स्लो लर्नर हैं। फिर उनके लिए इनिशिएटिव्स, जैसे मैंने पूछा ना कि लिस्ट ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन फॉर एडवांस्ड एंड स्लो लर्नर, ये आपने देखा होगा क्राइटेरियन 1 में, दे टॉक अबाउट दिस, that what steps you have taken for advanced learner and slow learner. Okay, तो ये उसमें फिर मैंने मांगा है कि इनिशिएटिव्स आपने क्या क्या लिए फॉर एडवांस्ड लर्नर एंड फॉर स्लो लर्नर. The next is contribution of alumni to the development of the department. Alumni, because even NAC they ask about your association with alumni. Okay, कि उन्होंने आके suppose alumni they can come and take sessions, they can guide the students, जूनियर स्टूडेंट्स की आगे वो क्या तैयारी करें, इंडस्ट्री में जाने के लिए क्या करें, आगे एजुकेशन में जाने के लिए क्या करें. सो दिस अगेन वी हैव आस्क्ड लाइक व्हाट आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एलुमिनाई फॉर द ग्रोथ ऑफ द डिपार्टमेंट. फिर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस, दिस इज अबाउट रिजल्ट, कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितने बच्चे पास हुए, व्हाट इज द पास परसेंटेज, कितने बच्चे हैं जो 90% से ऊपर आए हैं, या किसी को यूनिवर्सिटी टॉपर है, गोल्ड मेडल मिला है, तो दैट. Then departmental support for university examination, because this you can see in criterion 1. They ask like what is the involvement of your teachers in the university. उसमें university examination में भी हो सकता है, paper setting में भी हो सकता है, evaluation में भी हो सकता है, board of studies में कोई member है तो, या academic council में member है. Now you know that university में academic council में तो they take only one, there are hundreds of colleges. So everybody will not get chance there. But फैकल्टी है जहाँ पे वो बच्चे के पेपर इवेलुएट कर रही है या पेपर सेटिंग कर रही है. ओके, सो ऑल दिस सपोर्ट वी आर आस्किंग, बिकॉज सो दैट वी कैन फिल इन द एसएसआर क्राइटेरियन में 1.2 है शायद, या 1.2.3 ऐसे कुछ है, आप चेक कर लेना क्राइटेरियन 1 में. ओके, सो दिस इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. देन कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स, मैन्युस्क्रिप्ट, ये आपको शायद अभी पता नहीं होगा, बिकॉज जब नैक विजिट होती है then in the report there is one head this, क्योंकि SSR में नहीं है ये, बट NAC रिपोर्ट जब हम लोग बनाते हैं NAC विजिट में, then they ask क्या कॉलेज के पास कलेक्शन ऑफ रेयर बुक्स हैं, कोई मैन्युस्क्रिप्ट्स है, कोई स्पेशल रिपोर्ट्स है, तो वो भी आपकी लाइब्रेरी में होनी चाहिए. रेयर बुक्स जैसे फिक्शन बुक्स है, या कोई बहुत पुरानी, जैसे हमने अपनी लाइब्रेरी में रखा है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, साइंड बाय B.R. Ambedkar and the Constitution Committee. Okay, so that is the rare book that we have. या और भी काफी कलेक्शन है rare books का, तो वो भी आपके पास डिपार्टमेंट में होना चाहिए, ताकि फैकल्टी उसको आइडेंटिफाई करेंगे ना लोग, और ताकि यू कैन बाय दैट. देन प्लेसमेंट एक्टिविटीज, नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड द कैंपस, नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स ऑफर्ड, एवरेज सैलरी ऑफर्ड क्या हुई, दिस. देन असेसमेंट ऑफ फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स. Okay, then you know that in criterion 1.4 is about feedback. Okay, feedback means from all the stakeholders, students, alumni, parents, employers, okay, regarding the syllabus. So that also we should take every year. और feedback लिया क्या नहीं लिया, then I ask observation क्या है, क्या suggestion दिया है, और action taken क्या है. अगर किसी ने कोई suggestion दिया है तो we should incorporate that, जो हम कर सकते हैं. अगर 5 सजेशन है, 5 में से एक भी कर सकते हैं तो हम एक करेंगे उसको. एंड एक्शन टेकन, बिकॉज एट द टाइम ऑफ पीयर टीम दे आस्क दैट वेदर यू टुक फीडबैक और नॉट. फीडबैक में आपका ऑब्जर्वेशन क्या था लोगों का, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स का, और आपने उस पर क्या स्टेप लिया. दिस दे आस्क, बिकॉज आई गो एज अ पीयर टीम मेंबर, है ना, तो मुझे मालूम है वी आस्क दिस क्वेश्चन. सो देन नेक्स्ट इज सेल्फ अप्रेजल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ AQAR.
और NAC। तो इसमें सेल्फ अप्रेजल हम करवाते हैं डिपार्टमेंट वाइज, कि डिपार्टमेंट क्राइटेरिया 1 में कहाँ स्टैंड करता है। मैंने जैसे रेटिंग दिया है 5 to 1, ओके, 1 द लोएस्ट एंड 5 बीइंग द हाईएस्ट। तो हर डिपार्टमेंट अपना इवेल्युएशन करेगा फॉर ऑल द 7 क्राइटेरियाज की वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं। सो दैट इससे क्या फायदा होता है कि हम अपना गैप्स वी कैन इजीली फाइंड आउट कि कहाँ पर गैप है और कहाँ पर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। Then on the basis of analysis of AQAR of your respective department, kindly provide the gap analysis and measure to be undertaken to fill the identified gaps. तो हम डिपार्टमेंट से भी पूछते हैं ये कि आप अपना गैप एनालिसिस करो और आप उसको कैसे फिल करोगे इन द नेक्स्ट एकेडमिक सेशन, क्योंकि देखो हमें 5 साल में NAC के लिए अपने आप को तैयार करना है। ओके, सो अगर हम हर साल ही एक्सरसाइज कर लेंगे और गैप्स हमें पता चल गया और हमने नेक्स्ट ईयर उस गैप को फिल कर दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी हमें प्रॉब्लम आएगी NAC एक्रेडिटेशन के प्रोसेस में, बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप सोचो कि लास्ट के 6 महीने में काम करके हम NAC में A ग्रेड ले आएंगे या B+ ले आएंगे या A+ ले आएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। ये 5 साल का काम है जो आपको रेगुलर बेसिस पर ही करना है, क्योंकि आप पिछले सालों का काम कैसे करोगे, कर ही नहीं सकते वहां पर। Then list 3 best practices and 3 distinctive practices currently being practiced at your department. Okay, so ये भी क्वेश्चन है NAC में। So 3 best practices and 3 distinctive, which you can say that yes, your department is different from any other college, okay, in the city or in India or in state. So they should compare that. And then lastly, योर स्वॉक एनालिसिस के डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है और चैलेंजेस क्या है। ओके, एंड दीज आर द एनेक्स्चर्स व्हिच वी आस्क फ्रॉम द डिपार्टमेंट की क्लास वाइज टाइम टेबल फॉर द सेशन, एकेडमिक कैलेंडर जो प्लान किया था और फाइनल एग्जीक्यूट क्या हुआ, फाइनली हुआ क्या, देन मिनट्स ऑफ मीटिंग एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ ऑल द कमिटीज, देन स्टूडेंट प्रोफाइलिंग डिटेल्स वी आस्क, एंड जो प्लेसमेंट है उससे रिलेटेड कॉपी ऑफ ऑफर लेटर्स। क्योंकि अगर आप NAC में भी देखोगे, अगर आपने बोला कि आपके 100 स्टूडेंट्स थे प्लेसेबल और 100 में से आपके 50 स्टूडेंट प्लेस हो गए कंपनी में, दे विल नॉट जस्ट गो बाय वर्ड्स, दे विल आस्क ऑल द डिटेल्स, दे विल आस्क कि कौन सी कंपनी में गए, क्या पैकेज था, उसका ऑफर लेटर क्या है, देन यू हैव टू अपलोड ऑफर लेटर ऑन द NAC पोर्टल या अपनी वेबसाइट पे पोर्टल पे आप उसको डालकर आप उसको लिंक दोगे। So therefore offer letter is also important. अगर offer letter नहीं है तो they will not accept that. Okay, so these are the annexures that we ask from the department. So this is the format which I have prepared for my college. So it's just a sample, but yes, हमने काफी उसको rigorous काम दिया है सबको करने के लिए। Every year we ask them to do this. इससे क्या होता है कि हमारे लिए easily we can prepare ourselves for NAC. इसमें शायद इसलिए भी है because I have advantage that I'm going as a peer team member and I know okay what type of questions they ask and how things are going on. So that is the advantage that I'm having, and therefore it's advantageous for me at least. But since whatever experience I have, I'm sharing with you, okay, from both the side of the table. So therefore you can take advantage of experience of the others, है ना। हर चीज के लिए तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम ही चोट खाकर सीखें तभी सीखेंगे, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हैं। Okay, so this is the benefit of conducting this type of FTPs or seminars, so that we can learn from the experience of the others. Okay, so this is the format. Now again I am opening this प्लेटफॉर्म फॉर द डिस्कशन। ओके, बिकॉज क्या होता है कि सुनने से ज्यादा मुझे लगता है कि हम जितना डिस्कस करें, जो भी मन में आपके सवाल आ रहे हैं, जितना हम उसको डिस्कस करेंगे ना उतना ही बेनिफिट होगा। बल्कि आप अपने यहाँ भी जो भी NAC के लिए आगे जा रहे हैं, यू प्लीज कीप डिस्कशन, ओके, वीकली फोर्टनाइटली आप ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करें। इसलिए मैंने देखो, अगर मैं चाहती तो मैं इसी को 3 घंटे बोल सकती थी, पर मुझे लगा कि नहीं, मैं कम बोलूं और हम डिस्कशन ज्यादा करें, सो दैट इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग और उससे और अच्छा आपके सामने रिजल्ट आएगा एंड यू विल लर्न मोर। ओके, सो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन डिस्कशन इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द NAC process.
Okay, so I open the platform for the discussion. If anybody has any doubt or anything, then please feel free to ask. Anuradha ma'am, Madam, Yeah. may I it's a ask? wonderful presentation, ma'am. Thank you. Thank you so much. We do a lot in our college, but the way you have planned and the way you have prepared the format will definitely help all the faculty to be prepared in the beginning of the academic year and keep reviving every now and then. So that's a great, ma'am. I really appreciate you. Thank you, ma'am. It's a wonderful session. It's really brainstorming and helping us a lot. Thank you very much. I hope that format also will make us feel more responsible towards our college duties and plan accordingly. Yes. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. Ma'am, I have a question. Yes, ma'am, please. Ma'am, it is something which I want to clarify on behalf of my college also. Yes, ma'am. Ma'am, we did our first cycle of NAC way back in 2004. Okay. So now we are trying to get back into shape and we are streamlining everything. So this particular cycle which we now do will be counted as the second cycle, or because there has been a lot of gap, we will have to start all over again and it will be counted as the first cycle only? No, it will be counted as second cycle, but the assessment period will be only these 5 years which you will take. Like suppose if you apply in 22, ठीक है, तो 22, 23 अगर आप करंट ईयर लेते हैं या 21, 22 करंट ईयर लेते हैं, तो 5 years backward you will go. Okay, तो 16, 17 से 21, 22 you can say, or 20, 21. ओके, सो उसी पीरियड के लिए वो असेसमेंट होगा. सेकंड साइकिल तो होगा, वो फर्स्ट साइकिल नहीं होगा, बट जो उसके बीच का जो गैप है, लाइक 2004 में अगर आपको मिला एंड सपोज वैलिडिटी वाज टिल 2009. ओके, सो 2009 से लेके जो अभी तक का जो 16 में अगर आप शुरू करते हैं 16 असेसमेंट पीरियड, तो 9 से 16 तक का आपका वो गैप रहेगा वहां. ओके. Okay, but otherwise it will be counted as second cycle. It will not be starting from the scratch. So, ma'am, can we do something about that? So that gap which has now come. No, you cannot do anything now because that is. No, I mean to say that do we have to put in some papers explaining the gap or something like that? No. Okay. You need not. The only thing is that they will just take as a gap there. But that's all. You need not give any explanation because see, it is your choice. All right. Okay, but if now your NAC is matured, then you cannot write on your website that you are NAC accredited. Accredited. Okay. Because at present you are not. Yes, ma'am. Because validity has gone now. Okay. So, ma'am, which means that if we start now, that is, we have started preparing for NAC now. So, this will take us 5 years. The assessment years would be the next 5 years. No, if you are ready and if you have done work like during last 3-4 years, so you can apply next year. Okay. But आप data collect कर लो पहले and you just check where do you stand, whether you are in a position to apply, how much preparedness you have. Okay, so you assess yourself first. I mean to, Hanji ma'am. Okay, you do assessment. Okay, आप ऐसा करो ना, जो जैसे अभी जो फॉर्मेट मैंने डिस्कस किया है, आप SSR का फॉर्मेट ले and you circulate with your department. Give them 1 month time. Okay, let them fill data. अगर आप suppose 16, 17 या आप वो भी छोड़ो, अभी आप अगर 17, 18 से शुरू कर लो, okay, या 18, 19 से शुरू कर लो. 18, 19, 19, 20, 20, 21. 3 years का आप उनसे डेटा लो. Okay. Okay, and then you see where do you stand. मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है? दैट वी अप्लाई, और वो कब से कब तक हमें काउंट करेंगे? वो अप्लाई जिस साल में आप अप्लाई करोगे. जैसे अगर सपोज आप 1 साल बाद करते हो, है ना, अगर 1 साल बाद करते हो तो उस समय जो करंट पीरियड आपका चल रहा होगा, ईयर जो एकेडमिक ईयर होगा, सपोज 22-23 है.
जी, ठीक है, तो आपका करंट ईयर 22-23 हो गया, तो ओके उससे मैम, पीछे 5 साल आप जाओगे, 4 साल उसके और, पीछे, 22-23 हो गया, 4 साल और पीछे, ओके मैम, ओके, तो टोटल 5 इयर्स। टोटल 5 years. तो मैम टोटल जो AQARs हमने प्रिपेयर करनी होंगी, those will be for those 5 years. फॉर दोज 5 इयर्स, हाँ, Okay, 4 आपके AQAR जाएंगे, उसके बाद ही यू विल बी एबल टू अप्लाई। apply. Okay, ma'am. हाँ, Thank you so much. अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई। Right, ma'am. Thank you. हाँ, या एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। हाँ मैम, दिस इज सीमा अग्रवाल। सर मैम, मैंने ये एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे कि आपने बोला कि जैसा हमारा क्राइटेरियन 1 में है फीडबैक फ्रॉम द एम्प्लॉयर, सो मैम एनी वे कि जिससे हम थोड़ा एम्प्लॉयर से हमारा डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती, तो मैम कैसे फीडबैक ले सकते हैं उनसे, थोड़ा सा आप इस बारे में बता सकते हैं? तो वो तो या तो स्टूडेंट्स जो आपके वहाँ प्लेस हुए हैं, हाँ जी, उनको हाँ जी, तो आप वो करवा सकते हैं काम। हाँ जी, बस। एम्प्लॉयर इतना इजीली तो नहीं देते, देखो आप हाँ उनको जी मैम, डायरेक्ट हाँ तो जी, नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनके जी मैम, जी HR जी, के लोगों से पकड़ना तो मुश्किल होता है। हाँ और जी you मैम, can just have their email ID and you ओके मैम, can send mail to them requesting them if they can give any feedback। और उसमें कोशिश आप ये करो कि जब बच्चे प्लेस होते हैं ना, उसे साल फटाफट उसमें ले लो आप, ठीक है मैम, क्योंकि अगर आप 4 साल बाद कराओगे तो वो नहीं देंगे, ना बच्चा ठीक है इंटरेस्ट मैम, लेगा और ना ही एम्प्लॉयर करेगा। ये हाँ तभी जी मैम, होता है जब स्टूडेंट खुद इंटरेस्ट लेता है ना, हाँ जी तभी मैम, वो बिल्कुल देगा, मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू है मैम। ना। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट के ही कंपनीज में या नॉन कंपनीज में लगे होते हैं बच्चे जॉब में, जी जी तो जी, वहां हाँ से जी, आप ले सकते हो, क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, हमें कोटा भी तो पूरा करना है ना, फॉर्मेलिटी हाँ की, जी हाँ मैम, हमने लिया है, जी 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 जी, इसलिए। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम, हाँ जी। थैंक यू। Good evening, ma'am. क्या गुड नहीं, Am I audible? यस यस यू आर ऑडिबल। I'm Suman Sirohi from Government College for Women, Ambala City. First of all, compliments and hats off to you for presenting such a wonderful lecture. थैंक यू मैम। Everything was almost clear, but on account of certain technical snag, I couldn't hear what you said and what somebody put in between. So I think my question is somewhat similar to what somebody just asked. So that will be kind of repetition for others, but kind of clarification for me. So No, actually that question may not be, valid for you, because they were having gap of almost 10 years, 12 years between the first cycle and the second cycle. Okay, so their question was कि if they apply now after a gap of 12 years. And my question is related to my institution. Actually, our institution was established in 2012, Government College for Women, Ambala City. And presently, it's running in makeshift arrangement. We have yet to shift in our own building. Am I audible, ma'am? 1 minute. Actually, I was out of connection. Okay, so please repeat your question because there was no connection here. And that's why Hi, now repeat your question. Ma'am, our college started functioning with effect from 2012-13. Okay. And presently it's running in makeshift building. We have yet to move in our own building, which is under construction. Probably it will be complete by the end of next year or during the next session. And on account of our temporary building, we haven't thought of undergoing cycle 1, facing cycle 1. Okay. And number 2, we have yet to receive permanent appellation from the UGC. Everything has been in a way finalized. We have undergone interview by our Kurukshetra University, their visit has been completed, and they have recommended our name, the name of our college for permanent affiliation, and the UGC is to issue us that certificate. That is a matter of few days only. On account of these 2 points, number 1, our temporary building, number 2, the absence of our permanent affiliation certificate, can we
go for NAC, I know it that we should have completed 2 batches by this time. But then everybody in our college is of the view that we should face cycle 1 in our own building only. So how we are, ma'am, correct or not? That is my query. And secondly, we have started preparing for cycle 1. We are thinking of including the last 2 sessions, for example, 1920, 2021. And the moment we shift in our own building, then we will invite NAC team, request NAC team for the visit over there. So are we right or wrong, ma'am? Please guide us. Yeah. Yes, ma'am. It's a good question. Thank you, ma'am. If you want like my suggestion, okay. Thank you, ma'am, please. I'm giving my suggestion only because there is no hard and fast rule in this. Yes, ma'am. But as far as your 2 things are concerned, one is like moving to your own building and permanent affiliation. Now, permanent affiliation first, if I talk about, you are running your course already? Yes, ma'am. And your students are 2 courses. Students are there. Students are there. They are taking admissions, and 2 batches are pass out. Okay. So as long as this process is going on, permanent affiliation is not the condition anywhere in the NAC that you should have permanent affiliation. Okay. So while filling, can I interrupt, ma'am? While filling IIQA, we have to upload you have to upload only the permission letter from the university. Okay. Affiliation, that can be temporary affiliation, that can be permanent affiliation. So that is not a problem. Secondly, as you said, like my suggestion, whether you should go after shifting in your own building, then yes, I would suggest that you should apply only after shifting to your own building. Okay, because that will always give, good, because if you apply now, the process will take 6 months. And by the time maybe you are in the process of shifting there, okay, कभी भी NAC में आप जल्दबाजी मत करिए. और आप उसमें जितना भी आपके पास टाइम है 1 साल 1.5 साल, आप उसको प्रिपेयर करिए, उसके लिए काम करिए. Okay, prepare yourself for NAC and utilize this time for NAC preparation because it's a continuous process. It requires a lot of hard work, lot of, strategies. So therefore, you prepare, you invest your time in preparing for NAC, and you can apply only after shifting to your new building. So उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा because अभी क्या है, for everything they ask geotagged photograph, okay. And for infrastructure also they asked everything. तो अगर आपका प्रॉपर फैसिलिटीज होंगी, वहां पर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो आपका क्राइटेरियन 4 वैसे भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना. क्राइटेरियन 4 में आपको ज्यादा वेटेज मिल जाएगा. सो इट इज ऑलवेज बेटर दैट यू गो फॉर NAC ओनली आफ्टर शिफ्टिंग देयर. 6 महीने पहले 6 महीने बाद में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. Actually, recently we came to know that NAC is going to making this strict guideline for each and every HEI that we should undergo first cycle 1 up to 2022. वो है मैम, वो तो पहले से भी आया हुआ है कि 22 तक करना है. But because of this pandemic, okay, 2 साल जो सबका ऐसा गया है, उसकी वजह से they are going to extend this timeline. Okay, so we shouldn't worry regarding that. You should not worry. You can wait at least 1 year. They will increase for it. Suppose we shift in our building in next year. So should we include these previous 2 sessions or not? What is your suggestion, ma'am? Which session? We decided of recently we held a meeting in this regard in our college, and we decided to take these 2 sessions, that is 1920 and 2021. These 3 sessions will be covering after shifting to our own building. It will be covering, ma'am. अगर आप 1 साल बाद भी जाओगे, तो आप 1 साल बाद तो 22 में गए ना. 22 में अगर आप जाते हो, तो आपका वो सेशन जो होगा 22-23 का होगा एकेडमिक सेशन. तो आपको डेटा तो 5 साल का लेना है ना. तो ये तो आपका आएगा ही पीछे. आपका 18-19 भी आएगा, 19-20 भी आएगा, 20-21 भी आएगा, 21-22 भी आएगा. What I mean to say, मैम, कि 2 साल अब ले ले हम, ताकि वो गैप ना आ जाए, क्योंकि 2012 से हमारा इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था. उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैम. 2 साल अभी कैसे ले लेंगे? आप तो कंटिन्यूटी में लोगे ना 5 साल.
नहीं वो हम लेंगे ना नेचुरली। यही QA हम 45 डेज पहले भरेंगे जब हमारी तैयार हो जाएगी। तो क्या ऐसा ठीक रहेगा कि 2 साल अभी इस बिल्डिंग के ले लें और 3 साल वहाँ के ले लें? हाँ बिल्कुल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप 4 साल इधर के ले लो, 1 वहां का ले लो, उससे क्या फर्क पड़ना है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस समय तो आपका प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो आप उसको करेंगे क्राइटेरियन 4 में सबमिट, और जो पहले वाला जो बाकी इयर्स का है जो आपका पहले वाला था वो आप फिल करेंगे बस। ठीक बात है। तो उसमें कोई बिल्डिंग के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड 50 मार्क्स है मोटे तौर पे मैम। है, बिल्कुल है। तो 50 है तो आउट ऑफ 1000। Yes. तो हम 50 मार्क्स के कारण से अगर हम इतना गैप देते हैं तो दैट वुड मेक एन एडवर्स इम्पैक्ट। नो ऐसा नहीं है, देखो 50 मार्क्स नहीं है, देयर आर मेनी थिंग्स, फैसिलिटीज, जब टीम भी आएगी उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, इट इज नॉट जस्ट 50, जी मैम, इट विल हैव इम्पैक्ट ऑन अदर पैरामीटर्स आल्सो। यस मैम, क्योंकि आप रिसोर्सेज आपके पास क्या है कैसा है, जैसे क्राइटेरियन 2 में भी अगर आप आईसीटी की बात करते हैं, आईसीटी इनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास कितना है, अब यहाँ पर हो सकता है रेंटेड बिल्डिंग की वजह से ज्यादा नहीं हो फैसिलिटी, वहां पर आप फैसिलिटी बिल्ड करेंगे तो क्राइटेरिया 2 भी इम्पैक्ट करेगा, आपका 4 भी इम्पैक्ट करेगा और 6 पे भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि 6 पे भी आप लोगे ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन कि कितना इंक्रीज हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कितना खर्चा हुआ, आपने क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो आपका 2 पर भी इम्पैक्ट आएगा, 4 पर भी इम्पैक्ट आएगा और 6 पर भी इम्पैक्ट आएगा। तो हमने 2 ही साल इसलिए लिए सो दैट वी आर यूज्ड टू ऑफ ऑल दीस थिंग्स बाय दिस टाइम, बाय द टाइम वी शिफ्ट टू आवर ओन बिल्डिंग, तो कोई आदत हो जाए इसीलिए हम। यस यस, थैंक यू सो इट्स अ गुड डिसीजन। एंड देखो नैक का ग्रेड ज्यादा मैटर करता है, 6 महीने बाद या पहले से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज व्हाटएवर ग्रेड यू विल गेट दैट विल स्टे फॉर 5 years. Yes, thank you so much. Yes sir, thank you. Ma'am, I have one question which is similar to Suman ma'am's question. I am Sharma from Seeker. Our college was opened in 2013 with 7 UG subjects. Okay. And in 2017, we were upgraded. And in this upgradation, we were given 9 UG and 16 PG subjects. Okay, okay. We talked to the university. So 2013, 7 UG subjects were given permanent affiliation. But the 2017, 9 UG plus 16 PG, they are on temporary affiliation. Okay. To the university, we need to complete 5 years, and then in the 6th year, we can apply for permanent affiliation. Okay. So this is one aspect, this state of matters, and what we get through the orders is try for 2F12B. Now, it has come on the basis of those 7 courses, but 25 temporary programs, they disable us from getting a permanent affiliation. Everything is very clear. Yes, yes. Yes, the only thing is that when I share this thing with my superiors, it is like sort of difficult to explain to them 7 permanent versus 25 temporary. So dwarfish status allows us to move ahead. No, actually, see, even if it is a temporary affiliation, but affiliation is there, no? Affiliation is there. Okay, like suppose, for example, if I give you, you know, my university system here in Delhi, they don't give permanent affiliation at all. उनका ordinance में ही नहीं है permanent affiliation का system ही, वो temporary ही affiliation देते हैं। आज हमको 22 years हो गए institution को, 22 years में भी they are not giving permanent affiliation, every year they give temporary affiliation. तो उससे आपका नैक पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इतना होना चाहिए एफिलिएशन है, बस इतना ही काफी है। ओके, तो नैक से उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी 2F और 12B की जो आपने बात की है, 12B आपके बाकी कोर्सेज के लिए तो है, 12B मैम अभी किसी के लिए ही नहीं दिया नहीं है, तो वो भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2F इज सफिशिएंट, बिकॉज 12B वैसे भी
सबको नहीं देते, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको परमानेंट एफिलिएशन नहीं मिलता। मैं अपना ही एग्जांपल दूं, यहाँ का भी एग्जांपल दूं, तो हमारा 12 भी नहीं है, 2F है। ओके, बिकॉज परमानेंट एफिलिएशन नहीं होगा तब तक वो 12 भी मिलेगा नहीं। हाँ हाँ। सो ऐसा तो फिर ऐसा तो नहीं है कि हम नैक नहीं कर सकते हैं। हमने नैक भी किया, हमने NBA भी किया, हमने ऑटोनॉमस भी किया, हमने सब कुछ किया विदाउट 12 भी। Okay, without permanent affiliation, and we are A grade, and now we are going for the second cycle. Yes, thank you, ma'am. Okay, so that will not make a difference. Okay, ma'am. Thank you. Yeah. Yeah. Any more question? Good evening, ma'am. Yeah. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. I am Dr. C. Nitya from Marudar Kesari Jain College for Women, Vaniyampadi, Tamil Nadu, ma'am. Okay, ma'am. Ma'am, I have one query, ma'am, regarding that paper publication. We have more number of papers published by our staff members, but one thing is few only in the UGC care list, because UGC care list is every year it is getting changed also. Yes. If it is published in peer-reviewed journal, it will not be counted in NAC, because in this now the AQR, they are specifically given UGC listed publications, and they are asking UGC link also. Yes. For the paper. Yes. So in such a case, many staff members have published in peer-reviewed international journals and all. Whether it will be counted or not, ma'am? Where we can show that? It will not be counted, ma'am. It will not be counted at all, because clearly they have mentioned. But yes, what you can do, you can, there is one, scope that they ask additional information. Okay, yes, when you will fill your SSR or even AQAR, yes, ma'am. Yes, additional information may you can give list. But while calculating marks, they will not count. Okay, that they have clearly mentioned that they will not count. Okay, okay, ma'am. But for this information we can give, but you can just motivate your faculty members to publish in UGC care only. Okay. Otherwise they are not counting. API may even UGC is counting and they are accepting, but NAC may they are not accepting. Accepting. Ma'am, regarding that book and book chapter publication, if it is an ISSN number and ISBN number, they are accepting. They are accepting. That they are accepting. Yeah. That is in the separate head, no? Because there are two heads. One is for journal publication and one for conference proceeding and book chapter. And book chapter, books and publication. Yes, ma'am. 3.33 and 3.34 they have given. That they are accepting there. Okay, okay, ma'am. But in AQR, additionally, we can give this data, but it will not be counted in the. No, it will not count. Even same with SSR. When you will send SSR, no, when you will apply for NACS, another cycle, same there also, because you can just give as an additional information, just taking chance whether they accept or they don't accept. Okay, but I had discussion with NAC people there in Bangalore. They said that they will not count. That is very clear from their side. They are very clear with that. Okay. They are very clear. Yes. Okay. Ma'am, if it is a case, and one more doubt, ma'am, in the UGC, some of the journal, they are included in the year 1920. That has been removed in 2021. That particular journal has been removed from the UGC care list 2021. But we can, in the year 1920, it was in the list. Yes. Okay, then in such a case, then it will be counted. It will be counted because in that year it was there. In that year it was there, so it will be counted. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Yeah. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for the clarification, ma'am. Thank you. Yeah. Any other question? Ma'am, there is no more question in the chat box, but if anybody wants to ask, they can unmute themselves and ask the question to ma'am directly. Ma'am, I think there is no more question. But I have shared my number. I have shared my number in the chat box. So if anybody has any question or any more, further deliberation, if you need, then I'm happy to, be the part of your organization, and we can discuss in detail anything related to NAC, any particular criterion or process, anything if you have any doubt. Okay.
Thank you so much, ma'am, for being so humble and so nice to us and to our ignorance also. Thank you so much, ma'am. For formal vote of thanks, now I invite my dear friend Anchal. Anchal, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So Am I audible? Yes, you are audible. For formal vote of thanks, I invite Anchal. Anchal, now the dice is yours. Thank you so much, ma'am. A very good evening, one and all. It's my privilege to propose the vote of thanks on the national level STP on institutional values, vision, leadership, organized by IQSC under the Paramarsh scheme of UGC for the mentor institutes. On behalf of whole M.D.S.D family, I extend a hearty vote of thanks to our today's honorable speaker, Dr. Anuradha Jain, who has spared her valuable time to grace the occasion. Today, we had the opportunity to hear your thought-provoking address on academic and administrative audit. Ma'am, your session was really engaging and informative. Your thoughts have enlightened our mind and have shown us a new path. I'm immensely thankful to our respected and beloved principal, ma'am, Dr. Kiran Angra, Assessment Meditation Ambassador Paramarsh. Vision is the foundation of today's event. My sincere gratitude goes to our organizer, Dr. Anuradha and Ms. for their hard work and dedication. A special thanks to all the participants whose sincere and active participation has made this program more successful. Thank you, everyone, and have a nice day ahead. Over to you, ma'am. Thank you so much, Anchal. I also request you to kindly send the feedback form in chat box, and people can fill the feedback form and they can get the certificate. And there is one more announcement that tomorrow morning we'll join you at 10 o'clock and in evening we'll join you at 3 o'clock. Thank you so much, Anuradha ma'am. You have given your number also, and I hope your deliberations, your lecture was really very valuable for all of us. Thank you. You share my feedback also with me, at least what members, participants has given feedback, at least I should know. Okay, because